when Indians are casting their vote in parliamentary elections, the world watches with admiration as the world's largest democracy charts its future path. Because the outcome of decisions made by 1.3 billion people resonates around the globe. This is especially true for Europe. As vibrant democracies, India and the European Union share fundamental values and common interests. Together, we believe in each country's right to determine its own destiny. Together, we believe in the rule of law and fundamental rights. And together, we believe that it is democracy that best delivers for citizens. So, despite our geographic distance and despite the different languages we speak, when we look at each other, we do not meet as strangers, but as close friends. Democracy was born more than 2,000 years ago in Europe, but today its largest home is India. For the European Union, strengthening and energizing its partnership with India is a priority in this upcoming decade. Both our economies thrive in a world of common rules and fair competition. And we share the same interests in safe trading routes, in seamless supply chains, and in a free and safe trading routes in the Pacific, in seamless supply chains. Both our regions are driving forces in the digital revolution and open in the Pacific. And this makes us natural partners in both our regions are driving forces in the digital revolution to make sure that the rules of the analog natural partners in setting global standards also count in the digital domain. To make sure that the rules of the analog world both also count in the European Union are key in the transition and of course sustainable and green future for our planet. India and the European Union so we must pool our strength in the fight against sustainable and green future for our planet. And this is our common responsibility, not only in the fight against climate change, but most urgent towards the next generation. This is our common responsibility, not only towards the global community, however, but mostly towards the next generation. Our values are not shared by everyone. However, we all see the rising challenges to our open and free society by everyone. This is true for the rising challenges to our open and free economic domain. This is true for the technological and the economic domain. The reality is that but it is also true for security that underpin peace and security across the world are at the core principles that in Asia as well as in peace and security across the world are at stake. The images coming from Russia's in Asia as well as in Europe have shocked and are shocking the whole world. The images coming from Russia's attack on Ukraine have shocked and are shocking the whole world. The suburb 2 weeks ago, which was devastated by Russian troops as they withdrew from the north of Ukraine, of Kiev, I saw with my own eyes by Russian troops the bodies lined up on the north of Ukraine. I saw with my own eyes the bodies lined up on the ground. I listened to survivors of atrocious crimes the Kremlin soldiers committed. 2 weeks ago, which was devastated by Russian troops as they withdrew from the north of Ukraine, of Kiev hospitals. I saw with my own eyes by Russian troops the bodies as they lined up on the north of Ukraine. I saw with my own eyes the bodies redrawing borders by force
I listened to survivors of atrocious crimes the Kremlin soldiers committed. This goes against 2 weeks ago, principles and which was tightly savored by Russian troops as they withdrew from the battle of Ukraine, of Kiev hospitals. I saw with my own eyes by Russian troops the bodies as they lined up from the north of Ukraine. We will make I saw with my own eyes the bodies redrawing borders by by force. I listened to survivors of atrocious crimes the Kremlin soldiers committed. Why we're doing all 2 weeks ago, to help Ukraine. which was tightly savored by Russian troops as they withdrew from the battle of Ukraine, of Kiev hospitals. I saw with my own eyes by Russian troops the bodies as they lined up from the north of Ukraine. Sanctions are never We will make I saw with my own eyes the bodies redrawing borders by force. I listened to survivors of atrocious crimes the Kremlin soldiers committed. why we're doing all 2 weeks ago, to help Ukraine. which was tightly savored by Russian troops as they withdrew from the battle of Ukraine, of Kiev hospitals. I saw with my own eyes by Russian troops the bodies as they lined up from the north of Ukraine. Sanctions are never We will make I saw with my own eyes the bodies redrawing borders by force. I listened to survivors of atrocious crimes the Kremlin soldiers committed. 2 weeks ago, to help Ukraine. which was tightly savored by Russian troops as they withdrew from the battle of Ukraine, of Kiev hospitals. I saw with my own eyes by Russian troops the bodies as they lined up from the north of Ukraine. Sanctions are never We will make I saw with my own eyes the bodies redrawing borders by force. I listened to survivors of atrocious crimes the Kremlin soldiers committed. 2 weeks ago, help Ukraine. which was tightly savored by Russian troops as they withdrew from the battle of Ukraine, of Kiev hospitals. I saw with my own eyes by Russian troops the bodies as they lined up from the north of Ukraine. Sanctions are never We will make I saw with my own eyes the bodies redrawing borders by force. I listened to survivors of atrocious crimes the Kremlin soldiers committed. 2 weeks ago, which was tightly savored by Russian troops as they withdrew from the battle of Ukraine, of Kiev hospitals. I saw with my own eyes by Russian troops the bodies as they lined up from the north of Ukraine. Sanctions are never We will make I saw with my own eyes the bodies redrawing borders by force. I listened to survivors of atrocious crimes the Kremlin soldiers committed. 2 weeks ago, which was tightly savored by Russian troops as they withdrew from the battle of Ukraine, of Kiev hospitals. I saw with my own eyes by Russian troops the bodies as they lined up from the north of Ukraine. Sanctions are never We will make I saw with my own eyes the bodies redrawing borders by force. I listened to survivors of atrocious crimes the Kremlin soldiers committed. 2 weeks ago, which was tightly savored by Russian troops as they withdrew from the battle of Ukraine, of Kiev hospitals. I saw with my own eyes by Russian troops the bodies as they lined up from the north of Ukraine. Sanctions are never We will make I saw with my own eyes the bodies redrawing borders by force. I listened to survivors of atrocious crimes the Kremlin soldiers committed. 2 weeks ago, which was tightly savored by Russian troops as they withdrew from the battle of Ukraine, of Kiev hospitals. I saw with my own eyes by Russian troops the bodies as they lined up from the north of Ukraine. Sanctions are never We will make I saw with my own eyes the bodies redrawing borders by force. I listened to survivors of atrocious crimes the Kremlin soldiers committed. 2 weeks ago, which was tightly savored by Russian troops as they withdrew from the battle of Ukraine, of Kiev hospitals. I saw with my own eyes by Russian troops the bodies as they lined up from the north of Ukraine. Sanctions are never We will make I saw with my own eyes the bodies redrawing borders by force. I listened to survivors of atrocious crimes the Kremlin soldiers committed. 2 weeks ago, which was tightly savored by Russian troops as they withdrew from the battle of Ukraine, of Kiev hospitals. I saw with my own eyes by Russian troops the bodies as they lined up from the north of Ukraine. Sanctions are never We
I saw it in my mind. The bodies rejoin borders by force. I listened to survivors subjugate emotions of mine. Permanent soldiers in the going on 2 weeks ago. I saved Russian troops as they withdrew from my key hospital. I saw the violence taken by Russian troops. Bodies they lined up for the Actions are never I saw it in my mind. The bodies rejoin borders by force. I listened to survivors subjugate emotions of mine. Permanent soldiers in the going on 2 weeks ago. I saved Russian troops as they withdrew from my key hospital. I saw the violence taken by Russian troops. Bodies they lined up for the Actions are never I saw it in my mind. The bodies rejoin borders by force. I listened to survivors subjugate emotions of mine. Permanent soldiers in the going on 2 weeks ago. I saved Russian troops as they withdrew from my key hospital. I saw the violence taken by Russian troops. Bodies they lined up for the Actions are never I saw it in my mind. The bodies rejoin borders by force. I listened to survivors subjugate emotions of mine. Permanent soldiers in the going on 2 weeks ago. I saved Russian troops as they withdrew from my key hospital. I saw the violence taken by Russian troops. Bodies they lined up for the percent of their gross domestic product to meet the infrastructure needs of their own fast-growing economies. This means globally over $1.7 trillion per year. The needs are massive, but so are the opportunities. This is why we have introduced Global Gateway. Global Gateway is Europe's vision for investment in clean and sustainable global infrastructure. Global Gateway will enable up to 300 billion euros to support major infrastructure priorities around the world. From clean energy to digitalization, you name it, our offer will be transparent and values-driven. With Europe, what you see is what you get. And let me focus on specifically 2 points. First, on climate action. And here, let me take energy. Energy demand, for example, in India, has doubled since 2000. And this is good news, because it means better living conditions for millions of people. Over the next 20 years, India will need an additional energy capacity that is equal to the entire European energy consumption, additional. So the question is, will this energy be clean? Or will it poison our air that we breathe? Will the energy be renewable and homegrown? Or will it increase our dependency and allow for blackmail in the future? I was very glad, Prime Minister, to hear that you declared that India will be energy independent before it celebrates its 100th birthday of the country's independence in 2047. So the choices made today are crucial, not just for this great nation, but for the whole world. Global Gateway could bring, for example, to India and Bangladesh, more hydropower produced in Nepal and Bhutan. It could build clean hydrogen infrastructure to power up your heavy industries. Just yesterday, I visited the headquarters of the International Solar Alliance. This is a great partnership launched by Prime Minister Modi and now bringing together 86 countries.
So it's innovation at the service of people, because the International Service Alliance will benefit most the least developed countries and the small island developing states. And given the geopolitical and climate challenges we face, the business case today for solar is stronger than ever. So we should massively scale it up also through Global Gateway for the benefit of our common prosperity and the planet we all share. We also can help the climate when saving energy. I know this sounds obvious, but in a country the size of India, the sum of many small individual decisions can have a tremendous overall impact in the end. Just think of this example. As prices drop dramatically, in recent years, millions of Indians switched from using traditional old light bulbs to modern LED lighting technology. This resulted in annual energy savings of 30 terawatt hours. This is roughly enough to power 28 million average Indian households for a year, just by saving, or for the whole of Denmark, just through saving energy. So there's really big time potential in energy efficiency and energy savings. We also need to strengthen our cooperation in the digital field. This is my second point. Because cutting-edge technology is at the heart of our future cooperation. And Asia is a powerhouse when it comes to new technologies, from artificial intelligence to quantum computing. Our cooperation is about more than investment and infrastructure. It is about talent and technology based on fundamental values, on standards, for example. Today, India and the European Union both recognize that we are better off when we develop global standards for new technologies such as 5G, instead of seeking separate national solutions. And we share many of the same values when it comes to the digital world. We share the idea that privacy should be guaranteed online as well as offline, and that technology should enhance individual freedom, not the state's ability to control us. Think about data protection. European companies outsource many of their IT processes to Indian companies. Europe generates almost 1/3 of the revenues for the Indian business process outsourcing sector. And with equivalent rules, we could unlock even greater data flows between our regions with immense benefits for the companies in our respective regions. As I said earlier, for the European Union, the partnership with this region is one of our most important relationships for the coming decade, and strengthening this partnership is a priority for the European Union. Our strategic cooperation should take place at the nexus of trade, trusted technology, and security, notably in respect of challenges posed by rival governance models. And therefore, I am very pleased that today Prime Minister Modi and I have agreed to establish an EU-India Trade and Technology Council to tackle key trade, economic, and technological challenges. And as like-minded partners, the European Union and India will be working on several tracks. We have launched negotiations on a free trade agreement, as well as on investment protection and geographical indications. For Europe, this is a strategic investment in our partnership with India. The European Union is India's third most important trade partner,
but we can do so much more. Our trade is far below our potential, both for Indian and European goods and services. So this deal will bring new technologies, new investment, an unprecedented integration into shared value chains. We are the two largest democracies in the world, and together we have a lot to give for the benefit of the people. Ladies and gentlemen, we are living indeed in a terra nova, as the title of this year's Raisina dialogue suggests. We all have to choose whether we want a terra nova to be wild, dangerous, and an unlivable place, or a better home for all humankind. I am convinced that democracies will have a crucial role to play in defining the world of tomorrow. I want Europe to be a partner for Asia in shaping this new world, a world of independent, yet interconnected countries, working together for a more prosperous and peaceful world, working together for the benefit of humankind. Thank you very much for your attention. May I now request the Honorable External Affairs Minister of India, Dr. S. Jaishankar, to propose a vote of thanks. Prime Minister Shri Narendra Modi ji, President von der Leyen, Excellencies, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to propose the vote of thanks at the inaugural of the 6th Raisina Dialogue. In 2015, Prime Minister, you gave us the task of creating a Make in India, Make for the World platform to debate contemporary issues. This reflected both your confidence in shaping the global agenda, as well as in the strength of our summoning powers. It would express both the rebalancing and the multipolarity that characterizes our times. This dialogue has been the most successful of our many responses to your call. 7 years later, we have today in our midst 1,200 participants drawn from 99 nations, ready to hear 100 panels and conversations. And I can say this with all humility, that the Raisina dialogue is among the best in its class. Among the geographies that have partnered this endeavor as it developed, Europe has clearly stood out. It is therefore only fitting that the keynote address today should be delivered by President von der Leyen of the European Commission. She and Prime Minister Modi were the co-chairs of the 27+1 EU summit at Porto in May 2021 that has set new directions for our partnership. Her personal leadership was largely responsible for the impetus given to the initiatives designed to take our ties to the next level. These include an FTA, an investment agreement, and a geographical indications agreement. Earlier today, we announced the launching of the Trade and Technology Council as well. This coordination mechanism will facilitate our working together on expanded trade, on trusted technologies, and on security.
The European Union has already articulated an Indo-Pacific and a connectivity strategy, respectively, that contributes to our convergence. Our climate action, digital, and other conversations are getting increasingly serious. And as we have heard, the EU is approaching global challenges with a much sharper strategic awareness. Indeed, these are the subjects of discussions at this very dialogue. Let me therefore conclude by thanking President von der Leyen for her very thoughtful address that has set the tone for our deliberations. Our collective appreciation, naturally, to Prime Minister Modi, who remains the inspiration for this dialogue. I recognize the commitment of the organizers, Observer Research Foundation, whose painstaking preparations are so visible, and I'm sure that you all equally applaud. And not least, I thank all participants and those who have joined us virtually for being part of this exciting journey. Thank you very much. So this brings us to the close of this inauguration session. I will request you all कि विभिन्न सेवाओं के युवा अधिकारी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में फिजिकली और वर्चुअल मोड में उपस्थित हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई लैटरल एंट्री स्कीम के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी भी उपस्थित हैं और पिछले वर्षों में जिन अधिकारियों ने असिस्टेंट सेक्रेटरीज के रूप में भारत सरकार में कार्य किया है, वे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। वैसे तो यह कार्यक्रम 2006 से आयोजित किया जा रहा है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सिविल सर्विसेज डे को और अधिक सार्थक और उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। कल पूरे दिन कई सत्रों में सामयिक और भविष्य की दृष्टि से देश के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया है। आप अवगत हैं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए संबोधन में इंडिया एट 2047 की परिकल्पना रखी गई है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इस कार्यक्रम में इन दोनों विषयों पर कल गहन चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त पीएम गति शक्ति, पीएम स्वनिधि योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत सैचुरेशन अप्रोच पर ब्रेक अवे सेशंस का आयोजन किया गया। इन सत्रों में लिए गए निष्कर्षों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोक सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स सिविल सर्विसेज डे की एक महत्वपूर्ण हाईलाइट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पब्लिक सर्विस की स्पिरिट को बढ़ाने, इनोवेशन को एनकरेज करने और सिविल सेवकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के उद्देश्य से इन अवार्ड्स के स्वरूप में निरंतर सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा यह भी प्रयास है कि अधिकारियों के स्थानांतरण या उनके रिटायरमेंट के बाद ऐसे प्रयासों को भुला न दिया जाए, बल्कि बेस्ट प्रैक्टिसेस का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो और उनका रेप्लिकेशन भी हो। इस वर्ष इन अवार्ड्स के लिए 715 जिलों से कुल 2105 नामांकन प्राप्त हुए। एक उत्साहवर्धक तथ्य यह है कि इनमें से लगभग 40% इनोवेशन कैटेगरी के अंतर्गत प्राप्त हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में प्राप्त नामांकनों का ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन किया गया है और इनकी स्क्रूटनी एक रिगरस प्रोसेस के द्वारा की गई है। जिन संगठनों को और अधिकारियों को आज पुरस्कार मिलेगा, मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। जिनको पुरस्कार नहीं मिल सका, वे भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अत्यंत सराहनीय प्रयास और कार्य किया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सिविल सेवकों को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल रहता है। इस कड़ी में उन्होंने न केवल वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार संवाद करने की परिपाटी स्थापित की है, बल्कि अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर हर स्तर के पदाधिकारियों और नवनियुक्त अधिकारियों से भी इंटरेक्शन किया है। इस उत्साहवर्धन के कारण अधिकारीगण एक नई ऊर्जा के साथ
अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम सभी सिविल सेवा के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए नए भारत की उनकी परिकल्पना को मूर्त रूप देने हेतु पूरी प्रतिबद्धता और तन्मयता के साथ कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कैबिनेट सेक्रेटरी श्री राजीव गौबा जी। अब हम निवेदन करते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपसे कि कृपया अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मिश्रा जी, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जी, सेक्रेटरी ARPG श्रीनिवास जी, सभागृह पे उपस्थित भारत सरकार के उच्च अधिकारीगण, PM एक्सीलेंस अवार्ड के विजेता, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको स्मरण होगा कि सन 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने हमारे आगे एक मंत्र रखा था, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। और उससे कुछ ही समय के बाद हमें उसका परिचय हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही एक कुरीति को समाप्त करते हुए सेल्फ अटेस्टेशन की इजाज़त दी और देश के युवाओं को गेस्टेड अफसर से अपने दस्तावेज अटेस्ट करवाने से मुक्ति दिलवाई। और देश को एक संदेश गया कि अब देश की बागडोर एक ऐसे प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, एक ऐसी सरकार है जिसमें ये क्षमता है, इस कैपेसिटी है कि वो अपने देश के नागरिकों पर विश्वास कर सकती है। उसके कुछ ही समय के बाद 15 अगस्त 2015 में लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि सरकारी पदों की नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा यदि समाप्त कर दी जाए तो कैसा है। मुझे खुशी है कहते हुए कि DOPT ने मात्र 3 महीने में प्रक्रिया संपन्न करके ये आदेश जारी किया और समाज के हर वर्ग के युवा को एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध हुआ। प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए हुए रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर चलते हुए लगभग 1,500 नियम कानून ऐसे जो समय बीतने के साथ अपना औचित्य खो बैठे थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया। शायद इस बात का एहसास नहीं होता कि इससे पहले की सरकारें इस बात को लेकर के श्रेय लेती थी कि हमने फलां कानून लाया, फलां नियम लाया। ये एक ऐसी सरकार थी जिसमें इतना आत्मविश्वास था ये कहने का कि अब इस नियम की आवश्यकता नहीं, इसे समाप्त किया जा सकता है। अनेकों नए प्रयोग किए गए जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरीज का 3 महीने का प्रशिक्षण और PM एक्सीलेंस अवार्ड का स्वरूप बदल दिया गया, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी साहब कभी कह रहे थे। इससे पहले अधिकतर ये पर्सनल प्रोफाइल पर आधारित होता था। प्रधानमंत्री जी के ही सुझाव पर इसे जिला स्पर्धा के आधार पर किया गया और इतना उत्साह कि देश के 700 से अधिक लगभग 100% जिले पूरे उत्साह में इसके साथ इसमें भाग लेते हैं। नागरिक भागीदारी और पारदर्शिता के संकल्प को निभाते हुए CP ग्राम का विस्तार हुआ है। 2014 से पहले प्रतिवर्ष मात्र 2 लाख ग्रीवेंसेस रजिस्टर होती थी, आज बढ़कर उसकी संख्या 25 लाख है, क्योंकि लोगों को, नागरिक को विश्वास जागा है, समय पर टाइम बाउंड तरीके से निवारण होने लगा। आपने स्वच्छता का अभियान किया तो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ARPG विभाग ने न केवल फाइलों का निवारण किया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप को डिस्पोज ऑफ करके 62 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा करवाया। ईज ऑफ लिविंग थ्रू ईज ऑफ गवर्नेंस, और उसके लिए अनिवार्य है कैपेसिटी बिल्डिंग। अब हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की ओर बढ़ रहे हैं। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में लागू कर दिया गया है और हम अब पंचायतों की तरफ रुख कर रहे हैं। प्रशासन गांव की ओर एक नई मुहिम ARPG के माध्यम से शुरू की गई है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का एक अद्भुत कॉन्सेप्ट आपने दिया वैज्ञानिक आधार पर, अब हम उसे ब्लॉक्स तक ले जा रहे हैं। मिशन कर्मयोगी, शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, वाइडर इंटेग्रेशन, नया कल्चर आपने इंट्रोड्यूस किया है। प्रधानमंत्री जी, गत 75 वर्षों में सिविल सर्वेंट की भूमिका निरंतर बदलती रही। जहां अंग्रेजों के समय उसे कलेक्टर कहा जाता था बिकॉज ही हैड टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द एम्पायर, आज उसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन कहा जाता है। ही हैज टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द वेलफेयर स्टेट। और आज 75वें साल में, जैसे आपने कहा, अमृत महोत्सव, ARPG का ही विभाग विजन 2047 पर काम करने में
लगा हुआ है कि सन 2047 के भारत में क्या आयाम होंगे, क्या मापदंड होंगे, क्या इंडेक्सेस होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना बोलबाला होगा, सिविल सर्वेंट की क्या भूमिका रहेगी, कितनी रहेगी भी कि नहीं रहेगी। और इसमें विशेष फोकस है उन अधिकारियों पर जिनके पास अभी 25 वर्ष और देने को है, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी द आर्किटेक्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, दे आर गोइंग टू बी द मेकर्स ऑफ मोदीज न्यू इंडिया। 100 वर्ष के भारत का क्या स्वरूप होगा, उसी कल्पना चित्र को हकीकत में ढालने के लिए संकल्प करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। भारत ने विश्व को बताया कि कैसे कोई कर्तव्य जन भागीदारी से जन अभियान और फिर जन आंदोलन बन जाता है। शासन, प्रशासन और नागरिक अगर एक कड़ी से जुड़े हों तो जमीन पे बदलाव नजर आता है। कैसे एक देश 21वीं सदी की ओर आगे बढ़ने का रास्ता खुद बनाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे एजेंट्स ऑफ चेंज सारथी बने, कर्मयोग के सिद्धांत पर चले और नए भारत की अभूतपूर्व विकास यात्रा के सहभागी बने। आइए देखते हैं ये फिल्म। देश के संविधान ने जो भी अधिकार देशवासियों को दिए हैं, जिन कर्तव्यों को निभाने की अपेक्षा की है, उनको सुनिश्चित करने में आपकी भूमिका अहम है। और इसलिए आपसे अपेक्षाएं भी बहुत रहती हैं, आप पर दबाव भी बहुत आते रहेंगे। आपको एक मंत्र सदा सर्वदा याद रखना है, फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले लें उसमें देश हित होना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक है। इसलिए आपके हर एक्शन, आपकी हर गतिविधि नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम, इसी भावना को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए। एक छोटे से गोदाम से शुरू हुई कंपनी आज देश विदेश सब जगह माल भेज रही है, सब जगह मखाना भेज रही है और इन सब का श्रेय सरकार को जाता है। हमारा बैकग्राउंड ठीक नहीं था, आज हमारे बच्चे एमटेक कर रहे हैं और कृषि पर आधारित ही हमारा जीवन यापन हो रहा है। खेलो इंडिया स्कीम थी, उसके अंडर में ये स्टेडियम बना है। अच्छी फैसिलिटी मिली है, बाहर नहीं जाना पड़ता प्रैक्टिस करने के लिए, पहले हमें बाहर रहना पड़ता था प्रैक्टिस के लिए। बच्चे लोग बहुत खुश हो रहे हैं ये सेंटर खुलने के वजह से और मोटिवेट हो करके देश के लिए और मेडल लाने की कोशिश में हम सभी खुश हैं। कैसे मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन हो और किस प्रकार से लोग उस सर्विस को बिना किसी फिजिकली प्रेजेंट हुए फेसलेस तरीके से, सीमलेस तरीके से अपने घर पे ही उसको प्राप्त कर सकें। मेरा गांव मेरा घर है और अब यहाँ काम के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सारी सुविधाएं अब यहीं उपलब्ध हैं। पहले मैं पटरी वाला था लेकिन अब मैं पटरी वाला नहीं हूँ, मुझे अपनी दुकान मिल चुकी है, मैं काफ़ी खुश हूँ। महकमा जी आपने मुझे एक
एक और बात बताई कि आप जो है कि आप दुकान पे QR कोड लेकर के जाइए, अपने दुकान पे रख लीजिएगा। इसके डिजिटल लेन देन करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा, इससे कैशबैक मिलेंगे। क्यों हम इसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करें और हम अपना बच्चा समझे इसको कुपोषण से सुपोषण की यात्रा कराने के लिए। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऑफिशियल्स ने ही अडॉप्शन चालू किया, धीरे धीरे तमाम अडॉप्टर्स को इसमें इनकॉर्पोरेट करते गए। మా గ్రామంలో గర్భిణీలు బాలింతలు पोषण अभियान ने हमें एक नई उम्मीद जगाई। फिर हमने मिनट प्रोग्राम की शुरुआत की, जिससे बच्चों और माओ के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और अब वो सुपोषित हैं। Major offshoot of this has been that it has changed our thinking and instilled in us a self-belief that our industry, big or small, is capable of solving our military problems. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से आज मेरा जो सारा समय की बचत हुई, पेपर वर्क कम हो गया और मेरे ऑनलाइन सारा काम हुआ। पोलोकार्बोनेट ग्रीन हाउस में 12 महीना सब्जियां उगाने से हम किसानों को जो है डबल इनकम हो रहा है और खुशहाली हो रहा है। विद्या समीक्षा केंद्र के मॉनिटरिंग से बच्चों के रिजल्ट में काफी सुधार हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा से 25 लाख रुपया लोन दिलवाए, जिससे हम अपना स्टार्टअप जोन चनपटिया में हम अपना काम कर रहे हैं। मेरी आंगनवाड़ी में जो 43 बच्चे थे, उनमें से 4 MM श्रेणी में थे। आज मेरे सेंटर में सभी बच्चे स्वस्थ हैं। हम ढूंढ कर ले आएंगे हर आस की परछाई को, हम हर कदम पे लांघ लेंगे चुनौती की ऊंचाई को।